Assalamu alaikum and welcome to Interbiology. In this video, we will talk about biological method. लेकिन इससे पहले कि हम biological method पे बात करें, let's try and understand what science is. Science is a way of knowing. It is an approach to understand the natural world around us. Science itself is derived from a Latin verb which means to know. और इसीलिए ये कहते हैं कि साइंस डेवलप हुई है इंसानों की क्यूरोसिटी से. Curiosity about life, curiosity about their planet and about their environment, and curiosity about other living organisms which live on the same planet. At the heart of science is a scientific inquiry. It is a search for explanation and information about all other natural phenomena. और इसी साइंटिफिक इंक्वायरी को हम साइंटिफिक मेथड या बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं. यहां पर एक चीज का खास ख्याल रखना है कि साइंटिस्ट कोई खास मेथड फॉलो नहीं करते हैं साइंटिफिक इंक्वायरी के लिए. एवरी साइंटिस्ट कैन कम अप विद देयर ओन साइंटिफिक मेथड और देयर फॉर्म ऑफ इंक्वायरी. सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज एक्चुअली अ बायोलॉजिकल मेथड एंड हाउ द साइंटिस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड क्वेश्चंस अबाउट लाइफ. साइंटिफिक इंक्वायरी के अंदर जो सबसे पहली चीज है वो है ऑब्जर्वेशन. Observation is basically gathering of information, and we can gather information by two ways: by either using our direct senses or with the help of a tool. ये कोई भी टूल हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, दिस कैन बी अ थर्मोमीटर, दिस कैन बी अ वेइंग बैलेंस और इवन अ माइक्रोस्कोप. अच्छा, अब जब इन ऑब्जर्वेशंस को आप रिकॉर्ड करना शुरू कर देंगे तो इट विल बिकम डेटा. सो रिकॉर्डेड ऑब्जर्वेशंस आर डेटा. कुछ लोगों के ख्याल में डेटा का मतलब सिर्फ नंबर्स है. साइंटिफिक मेथड के अंदर ऐसा नहीं है. डेटा कैन बी ऑफ टू टाइप्स. इट कैन आइदर बी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव. क्वालिटेटिव डेटा का सिंपली मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं एंड यू आर ऑब्जर्विंग अ बिहेवियर ऑफ अ चिंपैंजी, दैट विल बी अ क्वालिटेटिव डेटा जिसके अंदर कोई नंबर्स नहीं है, कोई फिगर्स नहीं है. लेकिन इसी डेटा के अंदर अगर आप नंबर्स ऐड कर देंगे या फिगर्स ऐड कर देंगे तो वो क्वांटिटेटिव डेटा बन जाएगा. फॉर एग्जांपल, अगर आपने ये देखना शुरू कर दिया कि चिंपैंजी ने खास बिहेवियर दिन में कितनी दफा शो किया, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, तो अब इसमें नंबर्स आ जाएंगे, इसमें फिगर्स आ जाएंगी, तो वो क्वांटिटेटिव डेटा बन जाएगा. और फिर इस क्वांटिटेटिव डेटा की आप रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं थ्रू ग्राफ्स, थ्रू पाई चार्ट्स, थ्रू टेबल्स एंड फिगर्स. अब आपके पास ऑब्जर्वेशंस आ गई, उनको आपने रिकॉर्ड कर लिया, वो डेटा बन गया. जब आप इस डेटा को एनालाइज करेंगे तो वो आपको कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स देगा. एंड दोज कंक्लूजन्स विल प्राइमरीली बी बेस्ड ऑन रीजनिंग, जिसको हम लॉजिकल रीजनिंग कहते हैं. This logical reasoning again has two types. It can be inductive or it can be deductive reasoning. Deductive reasoning moves from general to specific and it utilizes if and then logic. आज से 2200 साल पहले एक ग्रीक साइंटिस्ट इरेटोस्थीन्स ने भी डिडक्टिव रीजनिंग का इस्तेमाल करके जमीन के सर्कमफ्रेंस का अंदाजा लगाया था. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये कहते हैं कि बाय डेफिनेशन ऑल मैमल्स हैव हेयर एंड वी फाइंड एन एनिमल व्हिच डज नॉट हैव हेयर, देन we may conclude that this animal is not a mammal. Inductive reasoning, on the other hand, moves from specific to general. For example, if poodles have hair and terriers have hair and every other dog that we observe have hair, so we can conclude that dogs have hair.
तो इस एग्जाम्पल के अंदर वी मूव्ड फ्रॉम स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स एंड देन वी जनरलाइज्ड इट टू ऑल अदर डॉग्स। और इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर ये जो जनरलाइजेशन है इसको फर्दर टेस्ट किया जा सकता है, जिसको साइंटिफिकली हम एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं।